हेलो स्टूडेंट्स, आज इंट्रोडक्टरी सेशन है इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का। सो आज के क्लास में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा किस तरीके से हम लोग इस पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, किस तरीके से एग्जाम्स, मॉक टेस्ट, इंटरव्यू के लिए कैसे तैयार करेंगे। ऑल दिस थिंग्स कम्स टुगेदर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पे हम लोगों का टोटल 4 पेपर है, चारों ही सब्जेक्टिव है। And that's a good thing because irrespective of the other examination, जैसे इसका parallel examination है ISS, उसमें 2 MCQ, 2 parallel and subjective. So here all are subjective, paper 1, 2 and 3 and 4. आमतौर पे एक इग्नोर जोन रहता है जीएस और इंग्लिश का, तो वी विल बी गिविंग यू सेपरेटली वन एक्स्ट्रा सेशन एवरी वीक। ओके, ये रहेगा। और इको का सेशंस तो रहेगा ही, वीकली 3 सेशंस। ओके, तो किस तरीके से स्टार्ट करेंगे? सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट ऑब्वियसली विद द माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज पेपर 1। इन माइक्रो स्ट्रक्चर, माइक्रो में सबसे इंपॉर्टेंट देखिए जो टॉपिक है उसमें से हम लोग स्टार्ट करें, कंज्यूमर बिहेवियर। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, एज आईईएस डजंट अलाउ यू टू डू इट विदाउट द पीजी डिग्री, यूजी में सिर्फ नहीं कर सकते। सो वी आर सीइंग दैट कि आपने थोड़ा बहुत काम किया हुआ, ये हम लोग मानते हैं, लेकिन मैं अपने सेशंस में व्हेन आई स्टार्ट डूइंग इट, वी डू इट फ्रॉम द वेरी बेसिक। ठीक है, जैसे भाई इस बार माइक्रो बोलिए, चाहे वो मैक्रो हो, चाहे वो इंटरनेशनल इको हो, चाहे वो स्टैट सेक्शन हो, सो नाउअडेज अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल कम्स। ठीक है, और ये न्यूमेरिकल थोड़ा नॉर्मल टाइप का नहीं है, दिस इज लाइक अ लिटिल बिट ऑफ एडवांस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल दे आर गिविंग। ओके, सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट you need to be equipped enough to solve them. Okay, तो इस तरीके से न्यूमेरिकल स्पेशल सेशंस भी हम लोग करें। नाउ इस न्यूमेरिकल के लिए यू नीड अ लिटिल बिट ऑफ कैलकुलस, a little bit of graph theory analysis. Yes, graph special classes I love to do. There will be a lot of graph sessions. जैसे मान लीजिए ऐसे एक ये concave convex, just to identify how these graphs are being done. Okay, and what is this envelope of curves like this? तो इसका मैथमेटिकल रीजनिंग क्या है, फॉर्मेशन क्या है, on how just by seeing an equation, just by seeing a cost curve or any kind of production curves, so you get to see that how to do the diagrammatic representation. Remember that in economic service, as everything is subjective, so you need to add data when it comes to Indian eco, development economics, and in this kind of cases in micro and macro, a lot of diagrammatic representations will be there. So special diagram based session I will take. This is very much separate diagram based session. Okay, as an example topic के साथ diagrams that will obviously come, but this is a separate diagram based session will also be taken. तो मैं क्या करता हूँ, I always try to do it parallel proceedings. भाई ये पैरेलल प्रोसीडिंग क्या है? तो पैरेलल प्रोसीडिंग कुछ ऐसा चीज है कि आप अगर पेपर 1 में चल रहे, साथ में पेपर 2 भी चलाना है, पेपर 3 भी चलाना है और पेपर 4 को भी चलाना है, जीएस भी चलेगा और साथ में इंग्लिश। ओके, सो बट इन दिस पेपर 1 यू नीड टू गो फॉर अ बल्क वर्किंग। बल्क वर्किंग मींस बल्क स्टडिंग, मतलब आप एक साथ में कितना टॉपिक के ऊपर काम कर सकते अलग अलग से। फॉर एग्जाम्पल आपने टारगेट दिया प्रोडक्शन और कॉस्ट मुझे खत्म करना है 2 वीक का, so we will do it in that way. Okay, we do it in a very small batches of 10 to 15 maximum. ठीक है, सो इस बैच के अकॉर्डिंगली मैं जाता हूँ। सो बहुत सारे केसेस में दैट्स व्हाई आई कैन नॉट, आई हेट दिस पार्ट टू गिव यू दैट इस वीक में ये होगा, इस वीक में जो स्टडी प्लान होता है मेरे लिए 1 सेकंड में एक बना के देना एक स्टडी प्लान, बट आई टेक अ स्पेशल सेशन ओनली कि किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। दिस इज आई हैव टू गिव एक्स्ट्रा टाइम फॉर दैट, बट व्हाई आई डू इट, बिकॉज़ एवरी बैच, एवरीथिंग, एवरी पीपल आर डिफरेंट। Okay, उन लोगों का requirement अलग होता है। Some people are doing jobs in the same batch. Some people have just done their masters. Some people have done masters, have done job now, only studying for this examination. Okay, some people are also parallelly studying for the other. So सबका जो requirement होता है तो ये अलग होता है। So as a result of that, my planning is very much oriented to the podium based पढ़ाई करते हैं। तो ये एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, in that way only you can reach to the IES point. That is the only possibility. अगर अब यहाँ से डायरेक्ट जब मार के ऐसे जाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ओके, तो अब आते हैं इसके साथ साथ अब कैसे होगा पैरेलली। इसके साथ साथ वी विल आल्सो स्टार्ट विद द मैक्रो।
पार्ट एज वेल। देखिए इसका जो पार्ट भी है जो जिसमें हम लोग का मैथमेटिकल मेथड्स है, मैथ ही को जो बोल के पार्ट है, उसके साथ भी ये भी पैरेलली हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको जैसा मैं कह रहा था कैलकुलस जानना पड़ेगा, ग्राफ्स जानना पड़ेगा, इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा, कैलकुलस के अंदर ही आता है डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस, और डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर भी क्लासेस लिए जाएंगे। स्पेशली एक और मेंशन करना चाहूंगा, लिमिट्स आर इम्पोर्टेंट थोड़ा बहुत उसके ऊपर, लेकिन दिस इज द मेन, ये और ये भाई, और डायग्राम में ये सब भी, जैसे मान लीजिए कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, जो प्रॉब्लम रहेंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ओके अच्छा, जो स्टैटिस्टिक्स के सेशंस रहेंगे, स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स भी है, और इसका दो पार्ट है, स्टैट एंड इकोनोमेट्रिक्स। अभी इकोनोमेट्रिक्स का क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट ने पहले पढ़ा हुआ होता है और कभी कभार किसी के लिए एकदम ही नया चीज है, तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट मैं इसको एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक दोनों कराता हूँ। इन जनरल द मोस्ट प्रेफर्ड बुक यू गाइस डिड इज गुजराती, पढ़ सकते हैं, और गुजराती की एक्सरसाइज से भी कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं, सो आई विल सॉल्व एवरी गुजराती प्रॉब्लम। ओके तो ऐसे करते हुए हम लोग के पास इकोनॉमिक थॉट का जो पार्ट है, याद रखिएगा पेपर 2 थोड़ा सा लेस स्कोरिंग वाला पेपर है। इकोनॉमिक थॉट, अनएम्प्लॉयमेंट, मैक्रो रिलेटेड, क्लासिकल मॉडलिंग, ठीक है, ये ज्यादा आएगा, फाइनेंशियल मॉडलिंग, फाइनेंशियल मार्केट, इकोनॉमिक, इसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट वाला जो चैप्टर है इसमें बहुत सारे थ्योरीज है, जैसे मॉडल से, डायग्राम से, हेरिस्टोटारो मॉडल है, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैसे फॉर्म होता है, आप अगर थ्योरी में नॉर्मली लिख देंगे कोई फायदा नहीं, यू नीड टू गिव इट एनालिटिकल अप्रोच टू इट। सो 1/3 ऑफ द 3 पार्ट, द इंडेक्स 1, I1, I2, I3, एंड हाउ दे आर बीन फॉर्म, दे आर अ लिटिल बिट ऑफ मैथमेटिकल फॉर्मेशन आपको देना। इन जैसे एग्जामिनेशन में आप जितना थोड़ा बहुत मैथमेटिकल की तरफ झुकेंगे उतना आपका एनालिटिकल पावर अच्छा है, यही पता चलेगा। इसमें और एक पार्ट बहुत जरूरी है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इसमें पूरा बेसिक टू एडवांस्ड सारा ही करेंगे। अच्छा याद रखिएगा, यू मास्टर रिसीव्ड योर यू परचेज्ड अ बुक्स आउटसाइड, हम लोग बाहर से भी बुक मिलता है, तो ये किताब में हम लोगों ने ये पूरा चीज को कवर अप किया है। ओके रिमेंबर दैट, इसके साथ साथ हम लोग इसके बाद चले जाएंगे द ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस एंड बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये एक्चुअली इंटरनेशनल ट्रेड का ही पार्ट है, इंटरनेशनल ट्रेड एंड पब्लिक फाइनेंस का ही सबसेक्शन। ये दोनों को थोड़ा ग्रिप करते हुए अब जो पेपर 3 और 4 पैरेलल, एक्चुअली 1 और 2 और 4 हम लोग एक साथ स्टार्ट करते हैं, फिर 1 और 2 चलता रहता है और 4 इज रिप्लेस बाय 3, फिर 1 चलता रहता है एंड दिस इज 3 एंड 4, एंड देन अगेन वी विल रिप्लेस दिस थिंग विद द 2 एंड अ 3 एंड अ 4। ओके तो इस तरीके से हम लोग का थोड़ा फॉर्मेट है, ठीक है, ये रखने का एक मेरा पर्सनलाइज सिस्टम भी है। देखिए ये इसमें अगर हम लोग देखेंगे, सो 1 इज कमिंग लाइक दिस, देन 2 इज कमिंग लाइक, 2 को थोड़ा अलग रंग से दिखाते हैं, 2 इज कमिंग लाइक दिस, 3 इज हम लोग ग्रीन में दिखा देते हैं दिस, और चौथे के लिए और कलर नहीं बचा तो लाल से दिखा देते हैं। So this is the scenario. So every class is taken into consideration with equal amount. But किसके साथ कैसा मिक्सिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Obviously with respect to the class and your requirement ये थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। But equally देखिए ये मैंने लगातार क्यों रखा, क्योंकि this is the kind of a thing which is very very analytical. The most analytical part is the paper 1. अगर आप थ्योरी पेपर भी देखेंगे, पेपर 2, 3, 4 में उतना मैथ्स नहीं रहता, इसमें भर भर के मैथ्स है, तो इसमें मुझे प्रैक्टिकली खत्म करके स्टार्ट करके एकदम बैक टू बैक चले। उसके बाद आएगा हम लोग का रिविजनरी सेशन। अब रिवीजन सेशन भी कैसे करना है, सो रेगुलर बेसिस में वी विल टेक मॉक टेस्ट। सो अब मॉक टेस्ट भी मैं कहता लेता हूँ क्यूमुलेटिव मॉक टेस्ट। सो क्यूमुलेटिव मॉक टेस्ट क्या होता है, सो फर्स्ट देयर विल बी लेक्चर 1, देन लेक्चर 2 एंड 3 के ऊपर जो सवाल थे उसके ऊपर है। Okay, then in the third one it is 1, 2, 3 and the fourth lecture is being introduced. Then 1, 2, 3 and 4, if it is 5 and 6, maybe 7, 3 lectures are being introduced in that. Okay, तो इस तरीके से एक दिया जाता है। Now it's a subjective thing, so subjective write-up analysis, subjective write-up analysis. तो ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि आप कैसे लिख रहे हैं इसके ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। ओके तो every day in the beginning first we will ask you to write up something, we will see that how you write, it doesn't matter, we will never be judging you on that basis, and on that basis we will try to give you a 2:1
sometimes 3:1 और sometimes even 1:1 बेस क्लास। तो उसमें आपका सोच कैसा है, आपका एनालिसिस कैसा है और किस तरीके से आप इसे बदल के अपना इंप्रूवमेंट कर सकते हो उसके ऊपर भी काम करेंगे। ओके, तो रेस्पेक्टिव वे में ये भी चलता जाएगा। सो ये जो क्लास जो होगा हम लोग का, ये देखिए ऊपर जाएंगे जितना भी मैंने पढ़ाएंगे एक एक। सो आई डोंट डू इट फ्रॉम एक पीडीएफ ले लिया, मतलब एक बुक का कुछ कुछ पेजेस ले लिया वहां से पढ़ा दिया, ऐसे मैं नहीं करता हूँ। मेरा थोड़ा बहुत जो नॉलेज है वो विच आई ट्राई टू गिव इट टू यू इन द बेसिस ऑफ दिस डायरेक्ट क्लासेस। तो क्लासेस में जो मैं नोट्स बताता हूँ, सो यू गेट द थिंग इन माय हैंड रिटन फॉर्मेट। You already got a 4,500 class book here. Okay, so that has all the notes and the past year solutions are also being provided. तो लेकिन इस क्लास में हैंड रिटन नोट्स रहेंगे जिसमें आप डायरेक्टली कर सकते हैं, एंड ऑब्वियसली यू कैन टेक पैरेलल नोट्स एज वेल। ठीक है, तो ये कैसे, ऐसा समझ लीजिए, मैं अगर आपको इसको थोड़ा स्टोरी की तरह समझाऊं, फॉर एग्जांपल देयर इज अ बॉय एंड देयर इज अ गर्ल। ठीक है, चलिए, तो बॉय एंड गर्ल दे मीट एंड दे स्पेंड सम गुड टाइम, इधर उधर जाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। ओके, ये भी आइसक्रीम खाते हैं, ऐसा अकेला नहीं खा रहा है। ठीक है, तो आइसक्रीम खाया, घुमा फिरा। ठीक है, मूवीज देखने गए, मान लेते हैं कौन सा मूवी देखने गया, मान लेते हैं डीडीएल के मूवी, फिर से 20 वर्ष होते रोमांटिक मूवी देखने गया। ओके, सो नाउ दे आर गेटिंग अलोंग गुड। तो इस स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए दे नीड टू स्पेंड सम टाइम टुगेदर, अदरवाइज दे डोंट गेट टू अंडरस्टैंड ईच अदर, राइट? सो ऐसा नहीं कि सिर्फ से फोन या एसएमएस और इस तरीके से ही हो सकता है। व्हेन दे स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम टुगेदर, दे आर नोइंग ईच अदर। सडनली आप इसे लग रहा है, नो दिस बॉय डजंट लाइक डीडीएलजी, ही मे लाइक एन एक्शन मूवी, and even the girl thinks, okay, she likes maybe a romantic movie, but in a different language. So this kind of knowing and the structuring will make this relationship goes for a long amount of time, not just like a short amount of time. तो अगर, लेकिन ये जानने के लिए भी एक मूड होना चाहिए। हर दिन कोई किसी को जीके का क्लास थोड़ी ना, सो दे डोंट वांट टू नो ईच अदर, सो दे मे नॉट नो, ऐसा चलता है चलने दो, ऐसा नहीं। So they may feel some urge to know each other. So their behavior is the very key over here. तो इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का ये बिहेवियर वाला पार्ट कौन सा है, जेन, इज द इंटरव्यू पार्ट। व्हेन दे गेट टू नो यू, ओके, सो यू नीड टू नॉट ओनली स्टडी टू डू इट। इन माय क्लासेस आई डू इट, ऐसा नहीं कि रिटन और इंटरव्यू अलग। हम लोग के पास बहुत सारे स्टूडेंट लोग अलग से इंटरव्यू के लिए आते हैं, बट इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल टू डू these two things parallelly, क्योंकि तब सिर्फ इंटरव्यू के लिए टाइम थोड़ा सा तो कम रहता ही है, तो मानना ही पड़ेगा। ओके, सो दिस रिटन में इज जस्ट मीटिंग एंड ऑल, फर्स्ट टाइम डिटेल जो देखने चलेगा टाइप, and in the interview it's not like a normal DTH, because you have already studied everything and they know that you have a good knowledge, that's why you have cracked to the interview. In general, पिछले बार around 39 students got here, and among them there are total a good number of students from us, exactly मेरे साथ यहाँ से इंटरव्यू और ये दो मिला के total 11 students were there. Okay, I know it's not a very big number, but with respect to India, and with respect to this particular examination, we always try to do the exact number on this. Okay, from our 3 batches. So, and we do a batch around 10 to 15. So you can see that we try to maintain the balance. Okay, ये थोड़ा मुश्किल रहता है, तो इसीलिए ये parallelly मैं हमेशा in my classes I try to do it, me and the other professors who will be teaching you. Okay, so that you get ready for the interview. Even in the GS based question come in that, even English based questions comes in that. There is a hoax that people think that they, if you say it in Hindi, they have to ask you in Hindi. Yeah, that's cool, but actually it's a human preference also there. So try to answer in the language which they ask you, but we will try to we always try to give an English based and a training as well on that, so that your English also gets a little bit improved, because no one wants the polishing and other things are there, but in normal sense you can be at a good position. For example, there are other 39 they are selecting, they're taking interviews of around 70 to 75 maybe. So out of these people, so how this thing total is being coming. So total kind of analytical framework which is being done, their selection procedure is different. Okay,
And among the 39, then how many total is finally going? So they are dependent on how flamboyant they are. I'm not saying that knowing English will make you pass the examination, but still it enhances your chances a little bit. You can't take this, and don't believe in all the other normal videos and all. नहीं हुआ कोई बात नहीं चलो, okay, it has to be, there's no hard and fast rule in that. So in the classes we'll do it. Okay, and now in the paper 4, if we go, which is the Indian economy. So Indian economy is mostly database thing, and a lot of data every time we give it. Just say, for example, we have this 5-year plan has now stopped, and Niti Aayog has come, and which is better? A comparison of this thing. So आज के लिए जो आंसर आपके लिए वैलिड है वो शायद 6 महीना बाद वैलिड ना हो. Okay, so that's why our answers we also keep on changing, and a different kind of patterns are being introduced. Okay, so that you get a good understanding. So federal finance and budgeting and all these things in this way we will be doing. You can see we'll start with this, and again we will finish up with this in the middle. Okay, so this is the overall scenario. In the detail analysis also we will be doing it in the class. And so this is it for now. So we will start now the macroeconomics during the session. Okay, and while the class is going on, you can ask me anything to this number as well. Any kind of question, you can send me diagrams, any videos. Even if you get stuck into a video or seeing some others videos also, or any kind of newspaper, news channel kind of a thing you want me to analyze it, so I will help you to do that. But only one thing, you just also give it a try alongside. And obviously you need to cover up 100% of the syllabus, and we'll be covering that. And there will be a revisionary session. So we will cover the revision as well, just like the thing. And every time we try to take a approach of from the basic to advanced. Okay, so this is for the first part now. So now we will proceed to the second part of the session.